गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है ह्यूज कॉस्ट ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम कोल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई फॉरेस्ट नाम का एक फोरम है जिसने एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को लगभग $1 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी अगले 30 साल में अगर वो कोल से मूव अवे करना चाहते हैं तो कोल के अगर हम रिसोर्स देखें इंडिया में तो टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व इंडिया में 378.21 बिलियन टन्स है। अगर हम 2023 के आंकड़ों के हिसाब से देखें, ऑल इंडिया प्रोडक्शन जो कोल की है वो 997.83 मिलियन टन्स है। और एट प्रेजेंट इंपोर्ट पॉलिसी हमारी कहती है कि कोल को फ्रीली इंपोर्ट किया जा सकता है कंज्यूमर्स के द्वारा अगर उनको कमर्शियल नीड है उसकी। तो कोकिंग कोल को भी जो है वो स्टील सेक्टर इंपोर्ट करता है। पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कोल ट्रेडर्स जो है वो नॉन कोकिंग कोल को जो इंपोर्ट करते हैं। टोटल कोल इंपोर्ट जो है वो 261 मिलियन टन्स रहा है हमारा पिछले साल। तो ये जस्ट ट्रांजिशन की अगर हम देखें, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट, तो इसमें कहा गया है कि एक इक्विटेबल इंक्लूसिव शिफ्ट की ज़रूरत है लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ अगर हमें मूव होना है। तो वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया, वो वास्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कोल माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स रिलेटेड सेक्टर्स में एम्प्लॉय करता है। तो अगर आप कोल से मूव हो जाओगे तो उन्हें कहाँ पर आप जॉब्स दोगे। इंडिया को नेट ज़ीरो एमिशंस का 2070 का जो टारगेट अगर अचीव करना है तो जो कोल डिपेंडेंट वर्कर्स हैं या रीजन जो हैं वो उसमें पीछे ना रह जाएं, उसके लिए वो एक मेजर फाइनेंशियल चैलेंज है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्लाइमेट गोल्स के साथ बैलेंस करके चलना, उसके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी। लगभग 48% इस $1 ट्रिलियन का जो है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में हमें ज़रूरत होगी। तो इंडिया की जो जस्ट ट्रांजिशन होगी उसमें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। पब्लिक फंडिंग किसके लिए ज़रूरत पड़ेगी? नॉन एनर्जी कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए होगा उन वर्कर्स को, उन वर्कर्स को और कुछ स्किल देना होगा ग्रीन जॉब्स के लिए। न्यू बिजनेसेस को जो है एड करना होगा। इंडिया जो है $4 बिलियन का जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स होते हैं उसको, जो कि माइनर्स से कलेक्ट किए जाते हैं, और या फिर सीएसआर फंड्स को, उनको यूज़ कर सकता है न्यू बिजनेसेस और कोल डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ को रिहैबिलिटेट करने के लिए। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी पूल किया जा सकता है ताकि जो है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जा सके। अब इसी में ही जो है कुछ केस स्टडीज़ दी गई हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है जिसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इंटरनेशनली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, ईयू, नीदरलैंड्स और डेनमार्क से, जिसमें $98 बिलियन उनको अगले 20 साल में रिक्वायरमेंट है। और मोस्ट ऑफ द जो फंड्स उनको मिलेंगे वो ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। जर्मनी ने भी एक लेजिस्लेशन इनैक्ट किया है ताकि वो अपने कोल पावर को 2038 तक जो है वो फेज़ आउट कर दें, और उसके लिए उन्होंने $55 बिलियन एलोकेट किए हैं उन कोल माइंस और पावर प्लांट्स को जिन्हें वो क्लोज़ करेगा। ठीक है, तो फंड्स जो है वो कोल डिपेंडेंट रीजन्स या फिर उन कम्युनिटीज़ को जो है रिहैबिलिटेट करने में जो है वो यूज़ किए जाएंगे। तो फाइंडिंग्स जो है स्टडी की वो कह रही है कि बोकारो रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पर कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगभग 54% उस डिस्ट्रिक्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन देती हैं, और लगभग 1,40,000 के आसपास वर्कर्स वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं इस फील्ड में। तो स्टडी कह रही है कि बोकारो में अगर हम फुल कोल फेज डाउन शुरू करते हैं आफ्टर 2040 तो लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन वर्कर्स को रिहैबिलिटेट किया जा सके, कोल साइट्स को रीपर्पस किया जा सके और ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेड नेगोशिएशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है एक मोर कॉशियस अप्रोच या मोर कॉशियस स्ट्रेटजी अपना रहा है ट्रेड नेगोशिएशंस में, क्योंकि जो है वो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो स्मॉल कंट्रीज जैसे ओमान और पेरू के साथ उसको रोक रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जो एफटीए हमने किए हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली पार्टनर कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। तो इंडिया ने जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं यूएई या एशियान के साथ, उसके बाद जो है इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। एशियान के साथ तो खासकर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया का जो ट्रेड है एशियान के साथ, वो एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के साथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन वो बेनिफिट ज़्यादा एशियान रीजन को हुआ है। ठीक है, इंडिया ने अभी जो यूएई के साथ ट्रेड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसमें भी जो है यूएई को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज़ जो इंडिया डिप्लॉय करता है या एम्प्लॉय करता है, अगर हम देखें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फ्रेश स्टैंडर्ड को ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो
ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें फ्यूचर ट्रेड नेगोशिएशंस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। मॉडर्न चैप्टर्स जैसे कि लेबर, एनवायरनमेंट, ट्रेड ऑफ्स के ऊपर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं और फोकस रखा गया है ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर। इंडिया जो है अभी क्या कर रहा है कि लार्जर मार्केट जैसे यूरोपियन यूनियन या यूके के साथ हम अभी ट्रेड डील्स कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ट्रेड डील है उसको पॉज कर दिया गया है। इंडिया जो इवन एशियन ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी रिव्यू कर रहा है और बाय नेक्स्ट ईयर वो रिव्यू हो जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि एशियन में क्या हो रहा है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स एशियन कंट्री में आती हैं और वो इन्वेस्टमेंट रीराउट होकर इंडिया में आ जाती हैं और एक तरह से उसकी वजह से जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ठीक है, चाइनीज़ फर्म जो है एशियन या फिर की कंट्रीज़ जैसे कि वियतनाम का इस्तेमाल कर रही हैं या फिर मैक्सिको का भी इस्तेमाल कर रही हैं इंडिया में अपनी जो है प्रोडक्ट्स को फ्री ट्रेड पे एग्रीमेंट का जो है वो रूप देकर इंडिया में भेजने के लिए। तो चैलेंजेस क्या हैं? इंडिया के पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है ट्रेड नेगोशिएशंस की। तो होता क्या है कि फॉरेन नेगोशिएटर्स जो हैं उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जो फॉरेन जो नेगोशिएट कर रहे होते हैं उनकी उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो कुछ और जॉब किसी और पोस्टिंग पर चले जाते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो ऑफ कोर्स फिर जो बाद में नेगोशिएटर्स होते हैं उन्हें ज़ीरो से या स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। अब इंडिया ने चाइना लेड RCEP को भी एग्जिट कर लिया क्योंकि इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना से हमें खतरा लग रहा था, लेकिन चाइना और एशियन उसका पार्ट है। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना एशियन के थ्रू जो है इंडिया में जो है वो ये इंपोर्ट्स को पुश कर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है, राइज ऑफ टैरिफ्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स आ रहे हैं, न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ आ रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी इंडिया को जो है वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट फाइनेंस का जो इशू है वो एक क्रिटिकल टॉपिक बन चुका है ग्लोबल डिस्कशंस में क्लाइमेट चेंज पर, क्योंकि इसका जो बर्डन है वो डिस्प्रपोर्शनेटली फॉल होता है डेवलपिंग नेशंस पर। वो ही सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लड, ड्रॉट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को जो है वो फेस करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है? UNFCCC कहता है कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल फ्लो जिससे आप मिटिगेट या अडेप्ट कर सको क्लाइमेट चेंज को, चाहे वो पब्लिक फंड्स हों, प्राइवेट हों या फिर अल्टरनेटिव सोर्सेज के हों। मिटिगेशन का मतलब कि रिड्यूस या प्रिवेंट करना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अडेप्टेशन मतलब वल्नरेबल रीजन्स को या कम्युनिटीज़ को हेल्प कर देना ताकि वो अडेप्ट कर पाएँ क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनको इस क्लाइमेट फाइनेंस को देना बनता था, बट वो अलग बात है, उन्होंने नहीं दिया है। तो क्यों डेवलपिंग नेशन को ही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की? क्योंकि ये ऐसे रीजन्स में लोकेटेड हैं जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ज़्यादा प्रोन है, फिर ये ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं, बहुत ही कम फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं इनके पास। तो अर्जेंट नीड है क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशंस इन कंट्रीज़ को देने के लिए। तो उसी के लिए ही कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन हुआ था 2009 में, जिसमें कहा गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो $100 बिलियन हर साल क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में देंगे 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को। लेकिन ये गोल अचीव ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें ओवर रिपोर्टिंग की गई। डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी कमिटमेंट्स को रादर दैन एक्चुअल डिसबर्सल ऑफ फंड्स को ही जो है रिपोर्ट करती थी कि हमने तो इतना कमिट कर दिया है, चाहे वो एक्चुअल में दिया भी ना हो। फिर जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट एड होती थी उसको भी क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में दिखा देते थे। ठीक है, और लोन्स देते होते थे ग्रांट्स की बजाय और उसको दिखाते थे कि हम क्लाइमेट फाइनेंस दे रहे हैं। ठीक है, लगभग 70% जो क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर पैसा दिया गया वो फॉर्म ऑफ लोन्स में था। ठीक है, इंडिया के अगर हम देखें क्लाइमेट फाइनेंस नीड्स, तो इंडिया ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं कि हम 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बनाएंगे बाय 2030, 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन रखेंगे कैपेसिटी एनुअली, प्रोडक्शन कैपेसिटी एनुअली। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज लेके आएंगे 2030। इसके लिए लगभग 16.8 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अलोन उसी के लिए ही 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्दर अगर हम देखें तो इंडिया को 2020 से लेकर 2070 के बीच में 850 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नेट ज़ीरो अगर एमिशंस उसको अचीव करने हैं तो इसीलिए सारी जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये कह रही हैं कि 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट जो एक्सपायर होने वाला है 2025 में, उसके बजाय अब जो है न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल की ज़रूरत है। अब इसके अंदर जो है वो कोपेनहेगन अकॉर्ड की गलतियों से सीख रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब कमिटमेंट नहीं, एक्चुअल डिसबर्सन रिपोर्ट करनी पड़ेगी। न्यू और एडिशनल फंडिंग जो है एग्जिस्टिंग एड के नहीं, उसके बाद जो आप न्यू या एडिशनल फंडिंग दे रहे हो उसको अकाउंट किया जाएगा। पब्लिक कैपिटल जो है डायरेक्ट ग्रांट्स के फॉर्म में ही हम कैलकुलेट करेंगे
ये नहीं कि आप लोन दे रहे हो। प्राइवेट कैपिटल को भी मोबिलाइज करो पब्लिक फंडिंग इनिशिएटिव्स के लिए। तो ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो COP29 में डिस्कस किया जाने वाला है, जो अभी नवंबर में होस्ट की जाने वाली है। तो चैलेंजेस क्या हैं क्लाइमेट फाइनेंस में? डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उनकी ज़रूरत होती है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। और डेवलपिंग नेशंस जो है उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जो है वर्ल्ड आने वाले नवंबर में COP29 में जा रहा है, तो क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा ग्लोबल नेगोशिएशंस का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आज 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 जो है वो देने वाले हैं विज्ञान भवन में। तो फर्स्ट एडिशन जो था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 में, और ये गुड वर्क्स और एफर्ट्स जो कि इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस ने मेक किया कंट्री को अचीव करने में, जल समृद्ध भारत, उनको रिकॉग्नाइज करता है और अवेयरनेस जनरेट करता है लोगों में रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म किया है वो उड़ीसा ने किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने, और फिर गुजरात और पुडुचेरी ने, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मून लाइट प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने मून लाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है। और ये एक बेसिकली इसमें होगा क्या कि कॉन्स्टलेशन ऑफ अबाउट 5 लूनर सैटेलाइट्स होंगे जो कि अलाउ करेंगे एक्यूरेट ऑटोनॉमस लैंडिंग्स, हाई स्पीड कम्युनिकेशन और सरफेस मोबिलिटी। यूरोप का फर्स्ट एवर डेडिकेटेड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन होगा ये टेलीकम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज देने के लिए मून पर। तो डेटा ट्रांसफ़र लगभग 4 लाख किलोमीटर्स बिटवीन अर्थ एंड मून ये फैसिलिटेट करेगा। प्राइम फोकस रहेगा कि कवरेज जो है इसकी मून के साउथ पोल तक दी जाए। और ये इसकी जो सर्विसेज हैं लगभग 2028 से शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में ये फुली ऑपरेशनल होगा 2030 तक जाकर, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो हैं डेनमार्क, UK और सैकिया के, उन्होंने डेवलप किया है एक इंसुलिन जिसका नाम है NNC 2215, जो कि इसमें 2 तरह के पार्ट्स हैं। एक है रिंग शेप स्ट्रक्चर, दूसरा है मॉलिक्यूल जिसका सिमिलर शेप होता है हमारे ग्लूकोज जैसा, उसको हम ग्लूकोसाइड कह रहे हैं, ठीक है। कैसे काम करेगा ये? जब बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल्स कम हैं तो ग्लूकोसाइड जो है वो रिंग को जाकर बाइंड कर लेगा और इंसुलिन जो है वो इनएक्टिव स्टेट में फिर वो रहेगा, ठीक है। फिर जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज होता है तो ग्लूकोसाइड जो है वो ग्लूकोज से रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उससे जो है वो इंसुलिन जो है वो ट्रिगर होगा और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और रिसर्चर्स ने देखा है कि ये एज इफेक्टिव है एज ह्यूमन इंसुलिन। तो ये डायबिटीज़ में हमारे को बहुत यूज़ होने वाला है। डायबिटीज़ क्या है? क्रॉनिक डिसीज़ जो जिसमें होता क्या कि पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, उसकी वजह से जो है बॉडी जो है ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वो जो है बॉडी में ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल अभिधाम दिवस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने एक सेरेमनी में रिसेंटली इंटरनेशनल अभिधाम दिवस और को है जो है एड्रेस किया है, और पाली को एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है। तो अभिधाम दिवस जो है कमेमोरेट किया जाता है उस दिन पर जब लॉर्ड बुद्ध जो हैं वो डिसेंड हुए थे सेलेस्टियल रेयम से संकासिया, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर। तो अशोकन एलिफेंट पिलर जो है वो हिस्टोरिकल मार्कर है उस साइट का। सेलिब्रेशन जो है अभिधाम दिवस की वो कोइंसाइड करती है एंड ऑफ द फर्स्ट रेनी रिट्रीट ऑफ और जिसको वासा कहते हैं, और परवारन फेस्टिवल जब जिस टाइम पर मॉन्क्स और नन्स जो है वो अपनी रिट्रीट पीरियड को कंक्लूड करते हैं। और इंटरनेशनल अभिधाम दिवस को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ कोलैबोरेट करके या जो है वो सेलिब्रेट किया है या होस्ट किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज नसीम अल बहर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो INS त्रिकंड और डॉर्नियर मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडो ओमान बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं गोवा में। तो ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान, जिसको 1993 में इनिशिएट किया गया था। ओमान पहली कंट्री है GCC ग्रुप की जिसने इंडिया के साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेज शुरू की थी, और ये एक्सरसाइज इंटरऑपरेबिलिटी स्ट्रेंथन करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is huge cost of moving away from coal. This topic is important for your economy section. So a recent study by a forum named iForest has revealed that India will need over $1 trillion over the next 30 years for a just transition away from coal. So if we look at the coal resource in India, then as per the 2023 figures, the total estimated coal reserve is about 378.21 billion tons in India. The all India production of coal during the same period was about 997.83 million tons with a positive growth of 11.71%. At present, the import policy allows that coal can be freely imported by the consumer themselves, considering their needs based on their commercial considerations. Coking coal is being imported by steel sector, while the power sector, cement sector, and coal traders are importing the non-coking coal also. So total coal import was about 261 million tons. Okay, so what is this just energy transition? So basically, a just energy transition refers to an equitable and inclusive shift towards a low carbon economy. And India is the world's second largest coal producer. So it is already employing a vast number of individuals in the coal mining, thermal power plants, logistics, and related sectors. And as India is aiming for net zero emissions by 2070, it has to ensure that coal dependent workers and regions are not left behind in this transition, which poses a major financial challenge for India also. So balancing economic stability with climate goals will require significant investment. Okay, so nearly 48% of those estimated $1 trillion investments would be required over the next 30 years for in terms of green investments by India, so as to replace coal-based energy infrastructure with cleaner alternatives. India's just transition away from coal will require a mix of public and private investments. Public funding through grants and subsidies will primarily address the non-energy costs like community support, skilling coal workers for green jobs, and aiding new businesses. India's $4 billion district mineral foundation funds collected from miners along with the CSR funds can be used to support the new businesses and coal dependent communities. Private investments on the other hand are expected to cover most of the energy costs. Okay, so there are two case studies in front of us, like the South Africa one, in which the Just Energy Transition Investment Plan will receive international financial support from countries like the UK, France, Germany, US, EU, Netherlands, and Denmark. So this plan requires $98 billion over the next 2 decades, and most of these funds will go towards green energy investments. In case of Germany, Germany has enacted a legislation to phase out coal power by 2038, with over $55 billion allocated to close coal mines and power plants, and these funds will also be used to support coal dependent regions. Okay, so in case of India, Bokaro, the coal capital, or the coal based industries here contribute about 54% of the district's domestic product, and it employs around almost 40,000 workers in coal mining, power plants, and related sectors like steel and cement. So the study has estimated that a full phase down of coal in Bokaro will begin after 2040, and it will require about 1 lakh crore investments or, over the next 30 years to rehabilitate those workers and repurpose the coal sites and develop green energy infrastructure. So the next topic is trade negotiation of India. This topic is important for your economy section. So India is adopting a more cautious strategy in its trade negotiations, halting talks for free trade agreements with smaller countries like Oman and Peru. So this shift is due to concerns that past FTAs have disproportionately benefited partner countries. So India's trade agreements with countries like UAE and ASEAN have resulted in surging imports, widening the trade deficit, especially with ASEAN, which accounts for about 11% of its global trade. The bilateral trade reached about $122.67 billion. India's trade with ASEAN experienced growth after signing the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. However, trade disproportionately benefited the ASEAN region. India's trade deficit with the UAE widened after the signing of the CEPA in May 2022. So the Commerce Ministry is now drafting a fresh standard operating procedure to streamline future trade negotiations, which would include modern chapters on labor, environment, and trade-offs, and it will, with a clear focus on human resource mobilization. India is now focusing on trade deals with larger markets like the European Union and UK, and countries of geopolitical importance like the Maldives. Negotiations with smaller countries are paused because India feels that it has not received commensurate returns in the past agreements. India is reviewing the
ASEAN trade agreement, which has led to significant trade deficits post-COVID. This review is expected to be completed by next year. So the rising influx of Chinese investments and goods into ASEAN has sparked concerns over the rerouting of Chinese products into India through the region. So the economic survey has also highlighted that Chinese firms are increasingly rerouting supply chains through the countries like Mexico and Vietnam to India. Okay, so what are the challenges? So one of the major challenges is that we lack the subject matter expertise and institutional memory in our trade negotiations. In contrast, the foreign negotiators have more experience, which puts India at a disadvantage. So what happens is that Indian officials are rotated periodically, so their experience that they have gathered from the past negotiations remain underutilized. So India also has exited from the China-led RCEP due to concerns over rising imports from China. But still, China and ASEAN are part of RCEP, and this is how China is utilizing the ASEAN route to push exports into India. Okay, so global economic slowdown, rise of tariffs and non-tariff barriers, and new trade policies like the EU's carbon border adjustment mechanism and deforestation rules are certain major challenges that India faces in its trade negotiations. The next topic is climate finance. This topic is important for your environment section. So the issue of climate finance is a critical topic in global discussions on climate change because the burden of environmental challenges falls disproportionately on developing nations. These countries often bear the brunt of climate impacts like floods, droughts, and extreme weather events. So what is climate finance? So according to UNFCCC, climate finance refers to the local, national, or transnational financial flows that support efforts to mitigate and adapt to climate change. These funds can come from public, private, or alternative sources. So the key uses of climate finance include reducing or preventing greenhouse gas emissions. The adaptation means helping the vulnerable regions and communities adapt to the impacts of climate change. Developing countries are expected to contribute to the bulk of climate finance given their historical responsibility for emissions. Okay, so why do developing nations need climate finance? So many are due to geographical factors, because many of these regions are located in areas which are more prone to extreme weather conditions. Most of these economies are dependent on agriculture. Okay, they have fewer financial and technological resources to adapt to climate change. So there is an urgent need for climate friendly energy solutions for them. So here comes the role of Copenhagen Accord. Copenhagen Accord was a political agreement which was reached in 2009, and it under that accord, developed nations pledged to provide $100 billion annually in climate finance by 2020. And this goal has not been fully realized. Key issues with this commitment include that developed nations were reporting their commitments, not their actual dispersal of funds. They basically rebranded their the existing development aid as climate finance. Okay, and the most shameful part is that most of that finance was loans and not grants. About 70% of international public climate finance was in the form of loans. Okay, so India also has climate finance needs because we have made some ambitious commitments like 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by 2030, 5 million metric tons of green hydrogen production capacity annually, electric vehicle penetration across various categories by 2030. So we would require about 16.8 lakh crore investments in renewable energy projects by 2030. So green hydrogen mission alone would require 8 lakh crore investments. So India requires a total of 850 lakh crore in investments between 2020 and 2070 if it wants to meet its net zero emission target. Okay, so here comes the role of new collective quantified goal. So because the Copenhagen Accord was a dampener, so the developing countries are realizing that the $100 billion climate finance target is expiring in 2025. So there is a push for a new collective quantified goal, and which should focus on actual disbursals, not just commitments, new and additional funding beyond the existing aid, public capital in the form of direct grants and not loans like we have seen earlier, and mobilizing the private capital which results from public funding initiatives. Okay, so that there are certain challenges in public climate finance because developing countries
face twice the cost of capital for green technologies like solar photovoltaics compared to developed nations, and developing nations also need to balance economic growth with climate action. So because the world is preparing for COP29, this new collective quantified goal will gain momentum, and it will come at the forefront of global negotiations. So the next topic is National Water Award 2023. This topic is important for your governance section. So Honorable President of India will confer the 5th National Water Awards 2023 today. And the first edition of these awards was introduced by Department of Water Resources in 2018. The award focuses on the good work and efforts made by individuals and the organizations across the country in attaining the government's vision of a Jal Samriddh Bharat. These awards are meant for creating awareness among the people about the importance of water and motivating them to adopt best water usage practices. In the category of best state, the first prize has been conferred upon Odisha, with Uttar Pradesh securing the second position and Gujarat and Puducherry jointly securing the third position. Okay. So the next topic is Moonlight Program. This topic is important for your science and tech section. So recently, the European Space Agency at the International Astronautical Congress has launched its Moonlight Lunar Communications and Navigation Services program, which will have a constellation of about 5 lunar satellites, and it will allow accurate autonomous landings, high-speed communication, and surface mobility. It is Europe's first ever dedicated satellite constellation for telecommunication and navigation services for the moon, and these satellites will enable data transfer over 4 lakh kilometers between Earth and Moon, and the prime focus of this mission will be to offer coverage at the Moon's south pole as well. Okay, these services will start working by the end of 2028, and it will be fully operational by 2030. So the next topic is smart insulin, NNC 2215. This topic is important for your science and tech section. So recently, scientists from the Denmark, UK, and Czechia have developed insulin called the NNC 2215, which automatically responds to the changing blood sugar levels. So this newly developed insulin has two parts, a ring-shaped structure and a molecule with a similar shape to glucose called glucoside. So when blood sugar levels are low, the glucoside binds to the rings and it keeps the insulin in an inactive state to prevent further lowering of blood sugar. As the blood sugar level rises or blood glucose rises, the glucoside is replaced by glucose itself. It triggers the insulin to shift its shape and become active. So this researchers have found that it is as effective as human insulin and in lowering the blood glucose in rats and pigs. So diabetes is a chronic disease, and it occurs when pancreas can no longer make insulin. So these smart insulin can be a game changer in this disease management. So the next topic is International Abhidham Divas. This topic is important for your art and culture section. Recently, PM Modi has addressed a ceremony in celebration of International Abhidham Divas and recognition of Pali as a classical language in New Delhi. So Abhidham Divas commemorates the day when Lord Buddha descended from the celestial heavens to Sankasya, which is now in Uttar Pradesh. The Ashokan elephant pillar is a historical marker of this site, and the celebration of Abhidham festival coincides with the end of the first rainy retreat and the Pavaran festival, which is a time when monks and nuns conclude their retreat period with a ceremony. So this year the International Abhidham Divas was hosted by Ministry of Culture in collaboration with International Buddhist Confederation. So the next topic is exercise Naseem Al-Bahar. This topic is important for your security section. So recently INS Trikand and Dornier Maritime patrol aircraft participated in the Indo-Oman bilateral naval exercise called Naseem Al-Bahar, held in Goa. So it is a bilateral naval exercise between India and Oman. It was initiated in 1993, symbolizing the long-term strategic partnership between the two countries. So we should know that Oman is the first country in the Gulf Cooperation Council which has been conducting bilateral exercises with India jointly. So this exercise has two phases. First is the harbor phase, followed by the sea phase, and this exercise helps us to strengthen interoperability and enhance our understanding of each other's best practices. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.